कोडिंग कोडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बट उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसके सॉफ्टवेयर्स यानी कि IDEs को इंस्टॉल करना. Sometimes what happens, the IDEs cannot be installed due to there is a short storage problems in our computers. So what if I tell you कि कुछ ऐसे IDEs हैं जो आपके कंप्यूटर पर ऑलमोस्ट 0% स्पेस पर एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. बस सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, इंटरनेट, and then you are free to code. In this video, I'm going to tell you about the 3 IDEs which can completely change your coding game. So, make sure to watch this video till end. Let's get started. Hello, myself Lakshya Namdeo and welcome to BinaryOne. Coding or IDEs, these are very two different tasks. And coding के साथ साथ IDEs को इंस्टॉलेशन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है. If IDE is not installed properly, कुछ dependencies इंस्टॉल नहीं हुई, so it can create a way to problems for in your code. Usually हमारे लैपटॉप्स में या कंप्यूटर डिवाइसेस में स्टोरेज की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, जिसके कारण हम IDEs को completely effectively रन नहीं कर पाते. So here comes our savior, the online code editors. ऑनलाइन कोड एडिटर्स की दो खास बात. पहला, they take up to 0 to almost no space in your computer, क्योंकि ये IDEs ऑनलाइन होते हैं, यानी कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे जरूरत होती है. सेकेंड, you can access your code from anywhere in this world. जैसे कि आप इंस्टाग्राम को किसी भी डिवाइस पर लॉगिन करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं. आपने किसी भी डिवाइस पर अपनी कोडिंग की हो, बट अगर आप अपने किसी और डिवाइस पर इस कोड को खोलना चाहते हैं, then you have to just access your account with your login and password, and boom, you have your code on your device. So the first one in our list for online IDEs is CodePen.io. CodePen.io का बहुत ही beautiful interface है, जैसे कि एक कोडर को चाहिए होता है, and it is best suitable for web development. If you haven't watched my web development roadmap, then make sure to watch this video and you will get the complete idea on how to be a web developer. Second IDE है हमारा Gitpod.io. अगर आप एक GitHub फैन हैं और आप GitHub को efficiently यूज करना जानते हैं, then you will love this Gitpod. Gitpod में एक क्लिक से आप completely different environments पे जा सकते हैं. You can code in Python, Java and any language you want to do. तीसरा and the best IDE जब अभी तक मैंने जितना विजिट किया है is CodeShare.io. CodeShare.io एक काफी ब्यूटीफुल इंटरफेस के साथ आता है, and the most important thing is it can support 50+ programming language. जितनी लैंग्वेज हमने पढ़ी नहीं है उससे ज्यादा ये सपोर्ट कर सकता है. And there is a unique interesting feature in this कि इसमें आप ग्रुप कोडिंग कर सकते हैं. ग्रुप कोडिंग, यस, ग्रुप कोडिंग. ग्रुप कोडिंग यानी कि आप वीडियो चैट कर सकते हैं कोडिंग करते टाइम यूजिंग योर फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, जिससे कि आप मोर एफिशिएंटली कोड कर सकेंगे एंड यू वोंट गेट बोर्ड. You can feel like an office environment that you are in an office and you are coding on your cubicle. जो लोग ग्रुप कोडिंग में बिलीव करते हैं, then this IDE is must for you. और साथ ही साथ एक बोनस IDE मैं आपको बताने जा रहा हूँ, the CS50 IDE. CS50 IDE हार्वर्ड ने खुद बनाया है अपने CS50 प्रोग्राम के लिए. If you don't know what CS50 program is, make sure to watch this video on my channel which contains CS50 complete roadmap or complete information about CS50. सारे IDEs के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, and make sure to subscribe to my channel so you don't miss out on any new videos. Make sure to visit all these 3 videos which I have suggested, and अगर आपको CS50 IDE को यूज करना सीखना है, then I must recommend you to watch this video of my CS50 program. Always remember, when you are ready to create something astonishing and impactful for the future of this country, of this world, then there should be nothing that can stop you. No storage space, no software installation problems. Just create what you want. Make sure to subscribe to my channel so you don't miss out on any new videos, and hit the bell icon for video notifications. Like this video and comment down your thoughts on this video, and comment down the next video which you want me to do it. That's it for today, guys. This is Lakshya Namdeo and you're watching BinaryOne.